welcome or welcome back to my YouTube channel. So from the past few days I am getting one particular question in my DMs and in my comment section about the discontinuation bond, specifically about Subharti. What is a discontinuation bond, how is it applied, and if we want to leave BDS seat in Subharti, then what is the criteria? These few of the questions are regularly asked in my DM from the past few days, and in this video I will be answering to all your questions. So let us understand first what does this word discontinuation bond means. तो इसका मतलब ये होता है कि सपोज अगर मुझे कोई कॉलेज अलॉट हो गया है बीडीएस के लिए या फिर किसी भी और कोर्स के लिए, अगर मुझे कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है और मैं उसे किसी रीज़न से बाद में छोड़ देती हूँ, लाइक सपोज मुझे बीडीएस के लिए कोई कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे एमबीबीएस सीट मिल गई या फिर किसी और रीज़न से मैंने अपना बीडीएस डिसकंटिन्यू करा। इस कंडीशन में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेबल रूल्स and the undertaking that you sign at the time of admission. There can be financial liability, penalty or certain other conditions if you discontinue that course before completing that. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी आपके डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की पॉलिसी है, जो भी आपके डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड में अगर कोई अमाउंट है तो वो हर एक कॉलेज के लिए फॉर ऑल द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया वो सेम नहीं होता है, वो अमाउंट फिक्स्ड नहीं होता है. इट मेनली डिपेंड्स ऑन द स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी, on your college in which you are planning to take your admission, on the university, और उस ईयर के जो भी गाइडलाइंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग इट कैन वेरी. नाउ इफ आई टॉक पर्टिकुलरली अबाउट सुभारती, तो अभी तक जो ऑफिशियल 2026-27 का ब्रोशर है दैट हैज नॉट येट बीन रिलीज्ड. सो आई डोंट वांट यू टू गिव अ रैंडम अमाउंट एंड से yes this is a discontinuation bond when it has not yet been released by the college itself. So as of now, I cannot confirm any discontinuation bond or any discontinuation amount that will be applicable for this upcoming batch. So I think it's much better to give any person the right information rather than confusing him or her with the rumors or information that was all based on the previous years. क्योंकि ये सब जो rules होते हैं वो admission session to admission session, admission year के साथ भी change होते हैं, तो अभी तक as of now कुछ भी confirm नहीं है. So if you are planning to take admission in Subharti for the BDS then and also you are thinking कि क्या होगा अगर मेरे को next year या फिर बाद में MBBS की सीट allot हो जाती है, तो I will suggest you to please wait till the official admission terms are released by the college itself. And most importantly, please read the undertaking, the terms and the conditions that you are asked to sign at the time of your admission. So as soon as the official data will be released by the college, I will update you guys and I will tell you if there is any discontinuation bond and also if yes there is discontinuation bond, then how much you have to pay if you leave the BDS seat before completing it. So this was just a small clarification because I know a lot of you have been asking me this same question daily. And also I will say you to not follow any wrong information or any rumors that are spreading online or on your WhatsApp group. Please confirm these details by the college itself and also read the documents carefully when you are signing, especially at the time of your admission. Always verify the official term before you pay your fees or before signing the admission documents. So I hope this video will clarify all your confusion. Make sure to subscribe the channel. Okay, bye.